पायनियर्स होंगे और फिर फॉलोअर्स या डेवलपर्स होंगे। तो जैसे आप इन 3 चंक्स में मोस्टली स्कूल्स को करते हैं, और जैसे हमने उस दिन बात की schools generally are the theorists who are aligned with certain schools of thought, they are named under that school of thought because of their roots, okay? Not because of their contribution, which might be in line with that. Like especially the confusion happens for behaviorism, like Pavlov and Guthrie, they are considered to be behaviorists because their work is applied in behaviorism, but by roots they are associationists. So we'll talk about them as associationists. Now in structuralism, we know the father of psychology, or the first experimental axionologist set up here. He was the founder of structuralist thought, and his name was Wilhelm Wundt. And in 1879, he had established the first lab of psychology in Leipzig in Germany. But Wundt gets the credit not only of departing psychology from its philosophical or physiological roots and establishing as an independent field, but then they are the ones who, in fact, talked about the structure of consciousness. So for them, the major subject matter of psychology was the conscious experience of a person. And earlier, when we were talking about the philosophical roots, they were mainly catering to the subject matter as being something abstract, that was soul. And similarly, ऐसा ही कुछ इन्होंने उठाया, that is consciousness. And basically, structuralism में अगर आप postulates की बात करते हैं, the major postulates is that they tried to answer 3 questions about consciousness. That is what, how, and why. Okay? Now, when they talk about what, in fact, Wundt talked about only 2 questions, and later on Titchener added on to the third, that is the why. So, what is basically the content of consciousness? What constitutes consciousness? And how is basically that how the components that they talk about as content of consciousness, उसके जो parts हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे synthesize होते हैं या कैसे add up होते हैं to give you a conscious experience. ठीक है? And then later on, Titchener added the third question, and that was of why. That what are the, he talked about the neurophysiological substrate or the things underlying the conscious experience. कि अगर हो रहा है तो क्या biological processes हैं? Why you have a conscious experience that is happening. We also know that structuralism chose a method of scientifically studying the conscious experience, and the method was introspection. Okay? So introspection was the only thing available to them, because the major focus of structuralism, according to Wundt, was to study the experience of a person according to the experiencing person. Immediate जो उसका experience है, वो उनके नजरिए से समझना कि उनका क्या है. अब अगर आपको मेरा conscious experience समझना है और मेरे नजरिए से समझना है, then what is the way out? You ask me what I am experiencing, ठीक है? So naturally I have to introspect and report what I am experiencing, ठीक है? Now when you talk about structure, this is just the basic framework that I have told you. The anteceding factors which led to the origin of structuralism as a school were Weber and Fechner, who had already started their work. We know Weber and Fechner are the people who are associated with Psychophysics. Okay? So they had started experimentally validating how the physical stimuli are experienced differently psychologically. तो आपके physical stimulations का psychological interpretation कैसा होता है? Psychophysics यही बात करता है ना? आपकी जो physical stimulations हैं, जो physical चीजें हैं, उनको आप perceive कैसे कर रहे हैं? Now, before I dwell into structuralism, I would like to make you understand. We know what is the difference between sensation and perception. Yes. What is sensation? The information that you receive from your senses is the information that you receive from your senses. Okay. And when you give meaning to it, that is what perception is. Okay, the information that you receive from the senses. But then how do you receive the information? From the environment. From the Yes, there is some stimulation that hits your receptor organs, specific receptor organs. Science की अगर physiology पे इसमें हम बात करते हैं, जैसे मेरे जो आवाज़ है, it's in the form of sound waves. It is hitting your receptor organ for sound, that is your ear. वहाँ पे जो sound को पकड़ने के आपके receptor neurons हैं, वहाँ hit कर रहा है, ऐसे ही है ना? ठीक है? So it is creating a sensory impulse.
Yes, ma'am. अभी नहीं है बट बाद में बिहेवियर में इसकी बार बार बात आएगी. रिफ्लेक्स आप कितनों ने नहीं सुना? बाकी सबको एट्थ पता है? क्लास में नहीं था ये तो? रिफ्लेक्स आपका कॉन्सेप्ट from the क्या होता है? रिफ्लेक्स आपका spine. From the nervous system I have to. to direct impact. रिफ्लेक्स आप बताओ. सुना है तो? When we touch some more vessel or something, immediately a message is sent to remove our finger from there. The message is actually conveyed in the tip of our finger. Okay. आपने कहा कि अगर आप किसी हॉट सरफेस को टच करते हैं तो मैसेज गोज टू Message actually goes from our brain to tell the tip of the fingers to remove our finger from that vessel. She is saying if we touch a hot object, the message goes from the brain to the finger to remove the hand. Very sensitive. या फिर इस ये लैटर पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है? अगर हम बात करते हैं, अगर मोटे तौर पे हम बात करते हैं SR की, जो हॉट सरफेस को आपने टच किया वो स्टिमुलेशन है, स्टिमुलेटिंग कंडीशन है, और ये जो विड्रॉल ऑफ हैंड है ये क्या हुआ? Response. रिस्पॉन्स हुआ. और बीच में आप बात कर रहे हैं आपके ब्रेन की, जहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुआ. आप जो बोल रहे हैं आप ये बात करें कि ब्रेन ने मैसेज दिया कि हाथ विड्रॉ कर लिया. लेकिन रिफ्लेक्स आपका जो असली हिस्सा है वो तो ये है, आपकी एक एफरेंट न्यूरॉन होते हैं, एक इफरेंट न्यूरॉन होते हैं. यस मैम. कौन से वाले होते हैं? Afferent में भी जो information लेके जा रहे हैं. लेके जा रहे हैं. एफरेंट कौन से होते हैं? Okay, she says afferent is going towards the brain and efferent is coming from the brain. We agree to what she says? Yes, All ma'am. of us? Somebody wants to differ? No? None of us? I will also not. See, yes, अगर तुमको मुश्किल होता है याद करने के लिए अल्फाबेटिकली ये पहले आता है, ये बाद में आता है, तो पहले मैसेज जाएगा फिर मैसेज आएगा ना सीधा. ठीक है? So this is your afferent neuron and this is your efferent neuron. Okay? We can also say that they are carrying a neural impulse. What is this impulse? Sensory and motor. मोटर ऑर्गन को आया ना वापस मैसेज. अब अगर आप सेंसेशन की बात कर रहे हैं, कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज सेंसेशन एंड व्हाट इज परसेप्शन. सेंसेशन बेसिकली इज ओनली व्हेन देयर इज अ स्टिमुलस व्हिच इज hitting your receptor organ and the message has just gone to the brain. यहाँ पर खत्म हो जाता है आपका सेंसेशन. इतना सा जो पार्ट है रिफ्लेक्स आपका वो सेंसरी है, वो सेंसेशन है. ठीक है? अब आपने परसेप्शन बोला था, इट इज एडिंग Meaning. Now who does the meaning part? Brain. ठीक है. So जब यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो जाता है और फिर आपको पता चलता है कि ये जो है ये कुछ गर्म लग गया मेरे हाथ में, या perhaps if you have something that you know something like a sting, कुछ आपको शार्प लगा है, तो फिर ब्रेन बताता है चींटी काटी, मधुमक्खी काटी के पिन प्रिक हुआ. मीनिंग तो वहाँ से आता है ना. सेंसरी इनपुट तो वही है कि कुछ आपको चुभा है ना, फिर आप समझ नहीं आता कि क्या है. देन मे बी यू इंटरप्रेट कि इट वाज एन एंट स्टिंग, इट वाज अ बी स्टिंग, और इट वाज अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट दैट हैज pricked me. So it is basically the brain which does the processing and adds meaning. So we may say that if you have sensation, if you add meaning, it becomes perception. Okay, and I go step further. Are we familiar with the word called apperception? What is apperception? सुना है? What is apperception? सुना ही नहीं? No, ma'am. None of us? Okay. Apperception, देखो अभी आपके ऊपर बहुत सारे stimulations हैं. It's never that it's only my voice that is hitting your ears. Is that all? You're sweating. You are, maybe trying to understand what is happening. बाहर से शोर आ रहा है, लाइट है, बहुत सारे स्टिमुलेशंस हैं आपके ऊपर. और अभी लाइट आ गई और पंखा चल पड़ा तो वो एक और ऐड हो जाएगा, है ना? अभी हमें पता है लाइट नहीं है. सो ये सारे हमारे पास सेंसरी
reaction to certain perception, that becomes apperception. So what you're apperceiving is my voice, perhaps. But the moment I bring your attention that बाहर कितना शोर है, या somebody is talking और अभी ये whistle बजी, गया ध्यान उधर? Yes. That is apperception. आपने मेरी आवाज से हटके 1 सेकंड के लिए ही सही पर वो whistle को भी perceive. So when you selectively perceive certain things, or if I may say so, that if you attend to certain perceptions, it becomes apperception. So you have a number of sensations. You are perceiving all, not all, but most of them. You're adding meaning. अभी sensory input तो आपके implicit behavior भी चल रहा है ना, अंदर जो practice खा के आए वो digest हो रहा है, वो भी तो चल रहा है अंदर. हाँ जी. मैम उस पर स्पेसिफिक चीज पे खुद लेके जाते हो, जैसे कि हाँ. आपने बोल दिया वो देखो. जी. जब आप किसी चीज को attention देते हैं, तो वो वो टेंशन नहीं perception है, है. परसेप्शन कैसे नहीं? क्या कहते हैं? ठीक है, तो अगर sensation plus meaning is perception, then perception plus attention becomes अगर एकदम सडनली जैसे आप नहीं, बोल वो रहे हो, अच्छे समझ में आया, एकदम से perception में पत्थर आता है। नीचे गिरे, वो क्या होता है? पत्थर जो नीचे गिरा और आपको पता चला कि ये गिरा, और आपने मेरी आवाज छोड़ के उस पर ध्यान दिया, ऐसे टर्न किया या भाग लिए, यही गिर गया तो फिर तो चटनी मिल जाएगी, ठीक है? या एकदम ऐसे पीछे हो गए, वो रिस्पॉन्स जो आया है वो इस स्टिमुलेशन को आया. तब मैं कुछ भी बोलूँ कि नहीं नहीं हिलना नहीं, बैठे रहो, तुम नहीं सुनोगे ना, मेरी आवाज बैकड्रॉप पे जाएगी ना, ठीक है? तो आप जब, अब मैं जो कह रही हूँ कि कभी भी हमारे ऊपर एक स्टिमुलेटिंग कंडीशन नहीं चल रही, अभी हवा आ रही है बाहर से खिड़की से मुझे लग रही है, वो भी तो मैं परसीव कर रही हूँ, ठीक है? अभी जैसे मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल देने के लिए मैं फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड माय थॉट गॉट ऑन टू दैट, ठीक है? सो जो हमारी एपरसेप्शन है वो फ्लक्चुएटिंग होती है, लेकिन एपरसेप्शन जो है वो वॉलंटरी. अगर आप वुंड और टिचनर की माने, ये हम आगे करेंगे, मैं ब्रॉडली आपको बता रही हूँ इस उम्मीद में कि कल शायद हमारी मीटिंग में चल जाए और यही करेंगे बात, ठीक है? इसमें वुंड कहते हैं कि हमारी जो परसेप्शन और सेंसेशन है वो मोर और लेस हम लोग उसमें पैसिव. सेंसरी स्टिमुलेशन आ रही है, आई जस्ट कैन नॉट इवेड द नॉइज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड. माय ईयर, आई कैन क्लोज माय आई बट आई कैन नॉट क्लोज माय ईयर्स, कैन आई? No, so whatever sounds are happening in my environment, they are hitting my ears, and I am, passively, involuntarily, I am perceiving. ठीक है? But then, when you talk about conscious experience, I am putting those perceptions at the back seat and trying to be here with you and talking sense about the topic that I am trying to convey. So all that is my willful apperception. So apperception is voluntary. It is willful, whereas your perceptions and sensations are passive. You're not an active receiver of sensation and perception. That's Wundt's state. Some people might say a different story. That is what is Wundt, taken with. Now, when he talks about, the subject matter of psychology, and he says that subject matter of psychology basically is the immediate experience of a person, a conscious experience of a person, but from the viewpoint of the experiencing person. Now please pay attention to this sentence. I am talking about immediate experience. Okay? Immediate means at that moment. Clear? That is why we talk about introspection. Clear? Now immediate experience is different from another term which we use generally in sciences, and Wundt says that what we empirically gather data about in sciences is more of a mediate experience rather than an immediate experience. Now what does mediate experience mean? Mediate means that a stimulation is happening and the person is perceiving it, but uske beech mein there is an instrument or a gadget that mediates. Okay? So you have certain instruments, like for example I keep telling you that when you put in a thermometer in somebody's mouth and you see a reading coming, एक तो है ना कि आप हाथ लगा के देख रहे हैं गर्म है, ठीक है? तो चाहे आपका हाथ ही है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बता रहा है कि धूप खा रहे हैं, ठीक है? या फिर आप थर्मोमीटर लगा के देख रहे हैं और थर्मोमीटर में रीडिंग आ रही है और आप बोल रहे हैं फीवर, या वो बंदा बोल रहा है कि मुझे फीवरिश लग रहा है. तीनों में फर्क है. तो ये दो चीजें हैं जहाँ हम चाहे हाथ लगाए चाहे थर्मोमीटर लगाए, ये साइंसेस में जब हम करते हैं, गैजेट यूज करते हैं
हैं और फिर उसके बेस पे हम ऑब्जर्वेशन या एम्पिरिकल एविडेंस गैदर करते हैं. यहाँ पर थर्मामीटर इज अ mediating factor which is giving me a reading. But when the person himself or herself is reporting that I feel feverish, that is immediate experience from the viewpoint of the experiencing person. ठीक है? So Wood says that in psychology we talk about immediate experience and not mediated experience, and that too from the viewpoint of the experiencing person. I hope it's clear. Now in 18, थोड़ा सा अगर आपने लिखना है, I can make you write for one. Certain contribution please अगर आप लिखते हैं. We know that Wood was a trained physiologist and he did have a degree in medicine. He did his PhD and worked as an assistant in lab with Helmholtz and Müller. And there are certain important contributions of Wood. 1862. He contributed to a theory of sensory perception. In 1863, he delivered lectures on human and animal psychology. In 1875, 1863 lectures on human and animal psychology. In 1875, he started teaching at Leipzig in Germany and started working in a lab where he carried out certain experiments. And on the basis of this, in 1879, he established the first lab of experimental psychology. And in 1881, he started a journal, an independent journal called Philosophical Studies, which was later renamed as Psychological Studies. Philosophical Studies in 1881 was later renamed as Psychological Studies. एक ऑनर्स में नहीं किया, एलसीएम में या जीसीटी में मैंने देखा है फोटोकॉपी नोट सर्कुलेट होते हैं स्कूल्स के. दर्शन हुआ है उसके टाइप नोट्स है, देखिए. Ma'am, they give notes, but I'm not They sure. don't give notes. There are a set of notes which have been there since antiquity. वो चैपलिन से बने हुए मेरे पास है, मैंने इकट्ठे किए थे क्योंकि मुझे पता होना चाहिए मेरे स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे हैं. बहुत अच्छे बने हुए चैपलिन से बने हुए. और बहुत साल पहले एमसीए में बहुत टीचर थे स्ने मैम, वो उनके बने हुए हैं जो कि मैंने देखा है. सारा जीसीटी और सारा एमसीए ऑनर्स में पढ़ना था पहले. तो अगर आपने स्कूल्स बीए में ऑनर्स में पहले जैसे पीटीएम में थे तो मैंने वो बच्चों को पढ़ते देखा है. ठीक है. तो अगर आपको वो मिल जाते हैं तो वो भी अच्छे नोट्स हैं, आप उनको भी बेस रख सकते हैं. साथ में आप अगर आंसर चीजें सप्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है. बनी मैम मेरे ख्याल से जो फोटोकॉपी वाले दिया अंदर है वो भी स्कैन कॉपी प्रोवाइड करते हैं. मैंने सुना. इतनी क्लासमेट्स का ही है. और ये मतलब एज अ टीम अगर आप काम करोगे तो आप सबका फायदा रहेगा. आप इवन अगर हर्गनहैम भी आप इशू कराते हैं लाइब्रेरी से फोटोकॉपी लिए, एक या दो बच्चे चाहिए, बाकी जिसको कॉपी चाहिए वो बता दो, उनकी कॉपी एक ही बारी निकलती है. और अगर मैंने भी कोई बुक्स या कुछ दूँगी कभी तो प्लीज़ कोशिश करिए इसी टीम स्पिरिट के साथ काम करने की, क्योंकि जितनी बार फोटोकॉपियर में कोई किताब घुसती है उतनी बार उसके फटने के चांस बढ़ जाते हैं, माइंड खुल जाता है. ठीक है. तो आप अगर एक ही बार में घुसा है एक पेज, उसके चाहे 15 पेज कॉपीज निकाल लो, 20 निकाल लो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. वो कैसे टीम जो गया है वो बाकी उनका क्लियर कर ले, रेस्ट ऑफ यू पे दैट मीनिंग वे ऑफ इफ यू थिंक दैट सूट्स यू.
Okay. Now in 1862, Wundt, performed certain experiments with a very crudely made apparatus, and he called that as a thought meter. To begin with, in his lab, he started certain experiments with a thought meter, and it was like a pendulum. So every time, the person's thought shifted from one thing to the other, the pendulum shifted. So after the pendulum from one end to other end जा रहा है, the person had to report that how many thoughts changed the person's mind. It was a very crude kind of experiment, and on the basis of that, he concluded certain things, which led to him framing a complete department of experimental psychology. And 1860. Now the major findings or the conclusions that he drew from the experiment that he conducted with the major were: number one, that experimental psychology was feasible. You could experimentally study human behavior. सबसे पहली चीज. The second thing was that humans, they have selective attention, which means that we cannot attend to anything and everything that comes our way. We are very selective in our attention. That is what I was talking about at the section. Okay? So we are selective in our attention, and we can only attend to one thing at a time. कभी भी हम दो चीजों पर इकट्ठा थॉट नहीं करते, चाहे बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में फर्क हो, बट फर्क होता है. ठीक है? So we have selective attention, and we only pay attention to one thing at a time. Another finding or another conclusion was that it takes about 1/10 of a second to shift thought from one to another, according to the thought. 1/10 of a second to shift thought from one to another. And prominent theme of Wundt's psychology was the distinction between voluntary and involuntary actions. So on the basis of this, in 1890, you will find this in certain texts that Wundt's school is not called structuralism. Rather, in 1890, he named the school of thought as voluntarism. So Will was so important in his theory that he named the school as voluntarism rather than structuralism. In fact, structuralism is the term that was coined by Titchener. Titchener ने बाद में कहा था कि जो वुंड ने काम किया और जिस पर मैंने elaborate किया, ये structuralism है, और जो विलियम जेम्स कर रहे हैं वो functionalism. तो दोनों terms Titchener ने दी थी rather than Wundt. So Wundt preferred calling this school as voluntarism. Now, as I mentioned, the goal of psychology according to Wundt was to study consciousness and to answer the three questions, that is what, how and why. And by doing that, he was opposed to two already prevailing thoughts. One was materialism and the other one was British empiricism. Now what is materialism? Materialism basically is a belief that everything is made of physical material. And it is made of molecules or it is made of certain atoms. But Wundt says that consciousness is intangible. It is not made of some physical matter. So he was opposed to materialism. The second thing that I mentioned was that he opposed British empiricism, which was a belief that a person is a passive recipient and you only organize your consciousness activity. सेंसरी और उसके लिए आप पैसिव हैं और आप फिर अपने कॉन्शियसनेस को ऑर्गेनाइज करते हैं. Now, whereas when Wundt believes in volitional processes, he says that we are voluntarily, actively, willfully, involved in whatever we are perceiving or whatever is the state of our consciousness. So हमारी consciousness का हम voluntarily, selectively हम चुनते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं कि क्या क्या चीज़ मेरे कॉन्शियसनेस में भी रहेगी और क्या नहीं. अभी जैसे कि कायदे से मैं सोच रही हूँ और मैं मान रही हूँ कि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, पर अपने बहुतों का ध्यान बाहर जो बंदा चिल्ला रहा है उस पर है ना, जा रहा है ना ध्यान अंदर. आई कैन सी योर फेसेस टर्निंग ना, है ना. So you might call it distraction, but then this is that thing is being perceived rather than me. My presence goes in the backdrop rather than the person outside. Now, here when he talks about voluntarism, Wundt says that he makes a comment, which is that you have a will to make
Yes, sir. determinism. वो बात कर रहे हैं कि आप बिल के हिसाब से सिलेक्टिवली आपका मर्जी है तो आप किसी चीज़ को परसीव करते नहीं है तो नहीं करते। तो क्या जो मेरा कॉन्शियस एक्सपीरियंस है वो मेरी फ्री विल से बना है? बना है? अब मैंने तुम्हें एक कमेंट दिया मैम, यस अब मैं तुम्हें उनका एक कमेंट देती हूँ दैट यू हैव अ विल टू मेक अ चॉइस बट योर चॉइसेस आर रूल्ड बाय योर पर्पस so what does that mean that it is your purpose which determines what choice you will make अब जैसे ये कह रहे थे कि अब आपका विल तो है कि आप मेरी आवाज़ सुने लेकिन अब गिरना पंखा तो तब you have no choice no your basic purpose is to save yourself purpose shifts so what choice you will make is determined by your purpose so we cannot say that it is completely a stand of free will it is actually determined by your purpose ठीक है now when he talks about conscious experience he divides consciousness into two parts one is simple and the other one is complex and Wood says that the ways of determining or exploring these two aspects of consciousness are also different. When you talk about exploring or understanding or studying the simple part of your conscious experience, it is the normal method that we talk about as introspection, which was a chosen method of structuralism. So ये जो है ये आप introspection के through पढ़ सकते हैं. लेकिन ये जो पार्ट है आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है दिस इज नॉट ओपन टू इंट्रोस्पेक्शन बट दिस इज व्हाट ही सेज लेटर ऑन इन दिस theory that it is open only through naturalistic observation ठीक है and this is a complex part now when he talks about introspection as a method he further talks about two types of हम इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर वो दो तरह की इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं This further gets divided into pure introspection and the other one is experimental. ठीक है Pure introspection is the unstructured form of introspection as we normally know about introspection. To look within. अभी आपको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है वो आप just you say कि हाँ फीमेल वॉइस आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आप ये स्टोरी कर रहा है ऐसे ये लैंग्वेज बोली जा रही है ये टॉपिक बोला जा रहा है तो वो आपका जो आप एक अनस्ट्रक्चर्ड crude way of looking within and reporting your experience is pure. It is an unstructured self-observation. Whereas your experimental introspection is where you use lab instruments थोड़ा सा लिखो बातें tricky है समझने में काफी experimental introspection uses lab instruments to vary conditions hence you make results of internal perception or you try to make I'll repeat experimental introspection uses lab instruments to vary conditions so that you make results of internal perception more precise. Naturally, as the name suggests, experimental introspection can be done only in a lab setting, but here you are not using instruments to help the person introspect, but you are controlling the stimulations experimentally by the use of certain experimental apparatuses so that you can accurately say कि अगर इतना stimulation है तो ये perception हो रहा है और अगर ये stimulation है तो I hope I'm making myself clear. It is a controlled way of introspection. ठीक है where you are controlling the input and seeing what is the impact on the introspection. ठीक है so it is experimental kind of or a modifiable or a scientific kind of introspection. Okay. Now, generally, when we talk about experimental introspection, the ideal thing is that your introspection in the form of internal perception is as precise as the external perception. Like for example, आपने aesthesio
Yes, ma'am. साइकोफिजिक्स में, Yes, ma'am. ठीक है। कर दो। साइकोफिजिक्स में आप जब सीजोमीटर करते हैं उसमें हम एक इक्वेशन रखते हैं कि कितना हार्ड होना चाहिए आपका पिन प्रिंट। ये नहीं ना कि होली कर दो बात, ठीक है। सो आपका जो है और इतना भी हल्का नहीं कि उसको रिसीविंग आउट, ठीक। सो हम जब सब्जेक्ट की सेंसिटिविटी चेक करते हैं तो फिर हम उसको एक्यूरेटली ये मेजर करते हैं कि जितना आप दे रहे हैं प्रेशर क्या उतना ही फूड चल रहा है। अभी जो हम अभी इसको भी आपका एक प्रैक्टिकल करेंगे, इट्स नॉट ऑफ साइकोफिजिक्स बट इट इज ऑफ कंडीशनिंग। इन दैट वी विल यूज हैंड कंट्रोल उसमें आपको इलेक्ट्रिकल करंट मिलता है हाथ को, एंड जैसे ही शॉक बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग अवॉइडेंस कंडीशनिंग का हुआ है कि जैसे ही आपको करंट लगता है यू हैव द सर्किट हैज टू कंट्रोल करंट लगा और आपने कंट्रोल, ठीक है। इट्स दैट। अब उसमें आप दो लेवल ऑफ करंट को यूज कर रहे हैं, एक माइल्ड शॉक है और एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग शॉक है। एंड उसमें हम पहले सब्जेक्ट को सेंसिटिविटी चेक करते हैं। कईयों का माइंड में इतना दे आर मोर सेंसिटिव, लेकिन टेक्टाइल सेंसेशन बेटर होता है, तो वो हल्के शॉक पे ही इंस्टिंक्टिवली हैंड को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नॉर्मल कंडीशनिंग में क्या होता है कि जो आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है दैट शुड बी गुड इनफ टू इलिसिट रिस्पांस। नहीं है रूल बेसिक कंडीशनिंग का। अनकंडीशनल स्टिमुलस फूड शुड हैव अ सैलिवेटिंग प्रॉपर्टी होना चाहिए ना, और वेल न्यूट्रल होना चाहिए, सही है। तो वैसे ही करंट इतना होना चाहिए कि आपका ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्स इलिसिट करे। तो कई लोगों का कम पे आ जाता है, कईयों का कम में उनको पता ही नहीं चलता, परसीव नहीं करते, और फिर थोड़ा सा हम बढ़ा के देखते हैं और वो फिर उस पर हैंड कंट्रोल, ठीक है। और कई होते हैं जिनको अभी लगाई नहीं हो तो वो हैंड कंट्रोल सही है। शॉक से डर लगता है और उससे पहले वो पहले चीखना, अभी करेंगे तो देखना बड़ा मजे का होगा, ठीक है। और सारी करेंगे हम सब सब्जेक्ट बनेंगे अपना, पहले जिस दिन मैं फेमिलियराइजेशन कराऊंगी तो सबको आदत में आऊंगी मेरे से, ठीक है। और कईयों को ऐसा होता है, यू विल फाइंड जब आप करेंगे, स्पेशली आप नोटिस कंप्लेनिंग दिस वैसे लाइक मेल सब्जेक्ट वो दिलेरी में बैठे रहते हैं और लुक जाएंगे वो लग रहा है बट दे रिफ्यूज टू। अब अगर आप ये देखें तो ये आपका बेसिकली डू टू थिंक इट इज आल्सो साइकोफिजिक्स, बिकॉज़ स्टिमुलेशन आप सिर्फ दो तरह की दे रहे हैं, माइंड और एक थोड़ा सा ज्यादा। पर एक है जो अभी नहीं आया तब भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एक है कि सब आ गया तब भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वेरिएशंस है अगर आप इसको मॉड्यूलेट कर पाए एक्सपेरिमेंटली, इतने से इतना वेरिएशन आता है, इतने से इतना आता है, वो जो है इंट्रोस्पेक्शन वो आपका एक्सपेरिमेंट है। तो हियर यू आर यूजिंग लैब इंस्ट्रूमेंट्स ओनली टू मॉडिफाई इंट्रोस्पेक्शन सो दैट एक्चुअल जो आप वेरिएशन सिमुलेशन में कर रहे हैं उसका मैचिंग प्रिसाइज आपका इंटरनल कॉन्शियस एक्सपीरियंस भी वैसा ही है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, समझाया? Okay. Now coming on to the three basic questions which according to Wundt were primary goals of psychology, and I said mainly he talks about what and other things is about how. We try to answer these questions from Wundt's perspective. Now when he talks about what, he talks about the content of consciousness, or he talks about basically the elements of thought. Elements क्या है आपकी consciousness? Now here he says that any kind of mental experience or conscious experience can constitute of two things. One is sensation and the other one is feeling. तो हमने तीन की बात की, मैंने तीसरा डिक्शनरी में बात बैठा। साइकोलॉजी में हमने जब
modality. These are different modes of sensory experience. Okay? So sensations have modality. They also differ in terms of quantity. Or we also call it as intensity. Okay? Certain stimulations can be intense, certain may not be that intense. Okay? Okay? So quantity, or we call it intensity, and the third characteristic is quality. Quality, like for example, if you talk about only one mode, say visual experience, or maybe the tackling, taste, ठीक है? तो उसमें आगे आपकी क्वालिटी अलग है, sweet, sour, salt, quality too much sweetness, something sweet, ये intensities का फर्क है, ठीक है? तो आपके सारे sensory experiences की ये तीन characteristics हैं जिनपर आप उनको modulate कर सकते हैं या differentiate कर सकते हैं. Now coming on to this theory of tridimensional feelings, theory of feelings, it says that feelings in turn can be realized in three dimensions. One is pleasant versus unpleasant, that is one dimension. The second is excitement versus calm. And the third is strain versus relaxation. Strain versus relaxation. So any kind of sensory experience that you have, we say has an accompanying feeling which can be pleasant or unpleasant. I don't know about my voice, but I am finding the outside noise to be quite unpleasant. मैं तो दोनों sound waves ही आ रही है, ठीक है? मेरी आवाज़ भी हो सकता है आपको unpleasant लगे, तो हो सकता है 12 बजे की गाने, ठीक है? But then, so you can have sensory experience which is pleasant or unpleasant. It can be exciting or it can be soothing. Colors जैसे हम बात करते हैं, है ना? Some colors जैसे उस दिन workshop में भी बात होती थी, certain colors are stimulating, they trigger emotions. Yes. Whereas certain are soothing, they are calm. Similarly, voices, musical notes, आपके जो pop songs हैं वो आपको pep up करते हैं. I was surprised. I had बहुत साल पहले first batch that I taught. I had a student in honors in undergrad. Finally, he got into hard drugs. फिर वो बाबा बन गए और turned into a schizophrenic thanks to the LSD that he was included. And I remember talking to him once before he went into that state. He used to come for classes. So एक बार मेरी बात हुई उनसे, मैंने कहा, how did you? And he was very open about his alcoholism and everything. And I just asked him, I said, how did you fall into this space? He says, alcoholism my father introduced me to. We started drinking at home. And drugs, he says, credit goes to rock music. I never knew that rock music can induce addictive behavior. So that's surprising, and if you read literature, it is correct. Okay? So sound waves ही आपके लिए calming meditation में तो हम लगाते हैं, तो आपके लिए calming effect होता है, आपने कई चीज़ें होती हैं जो आपको excitement देती हैं. इसी तरह कई चीज़ें strain करती है, कई चीज़ें relax करती है. अब अगर आपको लगेगा तो वो जो टीचर बाद में बोले तो नहीं लग रहा overlap है, last dimension से है ना, तो टीचर बाद में बात करेंगे, उसको सही करेंगे. बाद में. I stop here. Second question. मेरे लास्ट टीचर Teacher,